Good morning, dear students. Welcome back once again in your computer class. In the last class, we have discussed the oral questions, quiz questions, fill in the blanks, MCQs, and the very short answers, and your assessment C part also. So, those students who have not watched the video up to now, that means the previous video which was uploaded on the last Friday, please watch that video to complete your exercise portion, because in this video we will discuss only the short answers and the long answers. So if you have not marked it up to now, so please watch it. So let us start with the question answers. First one is, give 3 examples of valid identifiers in Java. So open page number 70 everyone. Look at here in the assessment C, downward. See, valid identifiers we have done or not? Valid identifiers, है ना? So any 3 examples of valid identifiers you can take from here. So you can write example number 1, then your example number 8, then your example number 4. 3 valid identifier names. Example number 1, 4 and 8. That means you will write, first one is underscore ds, give the heading, this is your first. Then your second one is underscore chk. Then your third one is my file without any space. Without any space. Done. Next question. What do relational operators compare in Java? That means what is the use of relational operators in Java? So you can write it here. You can write it, the use of relational operators from the question first. Take out your copy or something and write it. Relational operators compare, mark up to here, relational operators compare. After compare, write it, 2 values in Java. Relational operators compare 2 values in Java and return return. Look it on the screen, return, and return either true or false, and return either true or false. This is the answer completed here. Answer completed. Then the next one is, list the 2 types of comment in Java. List the 2 types of comments in Java. The answer is on your page number 67 according to old book. In the new book I will show you the page number, so accordingly you can write it. Let me show the page for your comments. Here it is. Open this page according to new book. So only types we have to specify. So you will write from here, there are 2 types of comments as single line और मल्टी लाइन along with this symbol. ये symbol भी आपको लिखने हैं. Done. Along with the proper symbol you have to write. Next, long answer questions. Write a note on Java compilation. Page number 62, old book. Page number 62.
Let me show you the page. Here it is. Now start marking. This is the complete Java compilation process which is given here, but we will short the answer. So start marking the Java compiler from here. The Java compiler does not produce native executable code full stop. Mark here full stop. Instead, it produces a special format called bytecode. Mark up to here bytecode. फिर उसके बाद फुल स्टॉप के बाद सेम लाइन में आप लिखोगे आफ्टर फुल स्टॉप, इसको कट कर देना द जावा बाइट कोड को, इसके प्लेस पे लिख लीजिए इट. राइट इट हियर इट. इट इज़ अ मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर अ जावा प्रोसेसर चिप called Java Virtual Machine. The bytecode is independent of the computer system it has to run upon. Mark up to upon. Done. Then come to this line bytecode. Into को कट कर देना और bytecode से पहले यहाँ पर write it THE, the bytecode. The bytecode still need an interpreter to execute them on any given platform. To execute them लिखो them तक, ये कट करना है. To execute them and translate, उसके बीच का जो भी है cut that one. To execute them के बाद आपको लिखना है and translate it into the native language. Native language तक, up to here native language. This is the end of the answer. Now let me tell you the answer one more time. The Java compiler does not produce native executable code for a particular machine. Instead, it produces a special format called bytecode. It is a machine instruction for a Java processor chip called Java Virtual Machine. The bytecode is independent of the computer system it has to run upon. Full stop. The bytecode still needs an interpreter to execute them and translate it into the native language. ठीक है, यहाँ पर ये पूरा कट करना है. यहाँ पर look at this, do not write this one. This is your complete answer. Marked. Moving on to next. Next, what are identifiers? What are the rules to form identifiers? 63 page number. Identifiers and the rules. Open this page. Write the definition. Identifiers are the fundamental building blocks of a program. For example, विज के प्लेस पर विज को कट कर देना, यहाँ पे लिखना फॉर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल पहले यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, फुल स्टॉप लगाओगे, फिर लिखना फॉर एग्जाम्पल, देन कम टू द नेक्स्ट लाइन. फॉर एग्जाम्पल के बाद डैश लगा के नेक्स्ट लाइन में आना और लिखना वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, फंक्शंस एसेट्रा. ठीक है. आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल्स ऑफ द जावा स्टेट द फॉलोइंग. Then number 1 point is complete. 2 point मतलब point number 1, 2, 3, 4, 5 up to case sensitive. Cut this part. Done. Full points you have to write. I cannot short the answer more than this because rules we have to clearly specify. We cannot shorten the rules. Next one. What are operators? Write down their types with suitable examples.
Page number 65 and 66. Operators with their examples. Look at here. This is your page. Opened. Start marking. From here, a special symbol that performs a specific operation between two operands is known as operator. The different data types of operators are, full लिखना है आपको ये, arithmetic operators, definition पहले full लिखनी है, then come on the next page, relational operator, logical operator and assignment operator. ठीक है, ये लिखने के बाद you will write only the names of operators. It means you will give the heading after writing this 1 2 3 4 point. You will give the heading arithmetic operators here. पहले heading दोगे, उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ you need to write only this much. Cut this part. Do not write the description. Okay? आपको कैसे लिखना है ये, यहाँ पे आप एक टेबल बनाओगे अपनी कॉपी के अंदर, आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हेडिंग दोगे, आपको उसके बाद कुछ नहीं लिखना, मेक अ टेबल लाइक दिस एंड ऑन द लेफ्ट साइड राइट द सिंबल. फर्स्ट कॉलम में लिखोगे सिंबल, सेकंड कॉलम में लिखोगे नेम. सिंबल के अंदर आपका आएगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, और यहाँ पे उसका नेम क्या हो जाएगा, PLUS MINUS, like that. So this is your symbol and names. So ऐसे ही आपको बाकी के ऑपरेटर्स के लिए भी लिखना है. Only names, no description. Only names, no description. लेफ्ट साइड में क्या बनाओगे, पूरी एक टेबल बनानी है इस तरीके से. लेफ्ट साइड में उसके सिम्बल्स लिखने हैं और राइट साइड में उसके नेम्स लिखने हैं. ओके, सेम हियर यू विल गिव द हेडिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड आफ्टर दैट मार्क इट लाइक दिस. इसमें भी क्या करोगे, टेबल बनाना और प्रॉपर नेम्स एंड सिंबल. यहाँ पे ये हैं, देखो इसके नेम्स. ठीक है, तो आप यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ये लिखोगे और उसके सामने उसके नेम. दिस इज़ योर लेस देन, दिस इज़ योर लेस देन इक्वल टू, ये गिवन है ना, ऑल दिस. देन लॉजिकल, सेम वे लॉजिकल अप टू हेयर ओनली. Cut this. Assignment में only this one. ठीक है, completed this answer. Next, write down the steps to write a program to assign 3 numbers and calculate their sum. Now this program, आपको क्या करना है इसमें, देखिए मैं आपको इसका हिंट दे देती हूँ. लुक एट एनी प्रोग्राम लाइक सपोज दिस इज़ योर प्रोग्राम. ठीक है, अब मैं आपको इसी में ही चेंजेस करके बता रही हूँ, आपको इसी में चेंजेस करके करना है. टू असाइन 3 नंबर्स एंड कैलकुलेट देयर सम. अब यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है वो 2 नंबर्स के लिए, हमें कितने नंबर्स असाइन करने, इंस्टेड ऑफ 2 वी नीड टू टेक 3 नंबर्स. बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है ना, तो आप लिखोगे क्लास नंबर, ओपनिंग ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पूरा सेम लिखना है. यहाँ पर क्या करोगे, इंट ABC एंड टेक वन मोर, डू नॉट राइट सेमी कॉलन, राइट C के बाद कॉमा D, A, B, C, D. Then A is equal to 20, B is equal to 30 and cut this line. After this you write, suppose C is equal to 100 semicolon and D is equal to A plus B plus C. नंबर्स को ऐड करना है ना, like this. D is equal to A plus B plus C. ये करेक्ट करो पहले कॉपी के अंदर. डन. यहाँ पर A B C D 4 वेरिएबल्स आर देयर. ये करेक्शन करने के बाद आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ, नोट इट डाउन. देन the sum is
SOPLN यानी कि system.out.println द सम इज़, पूरा ऐसे ही लिखना है। एंड ये पूरा लिखने के बाद सी को नहीं लिखना है, क्या लिखोगे, सम किसके अंदर आ रहा है, डी के अंदर, तो सी ना लिख के सी की जगह पे सिर्फ डी लिखना, सी के प्लेस पे राइट इट हेयर डी। देन your one closing bracket and your one more closing bracket, and your question answers are completed here. Fine. Then on next upcoming Friday we have to do this one, computer room, this programs, all these programs we have to do in the copy, and all these programs I will tell you on board on next Friday. So up to here you complete your work. And one more thing, those who want to check to those who want to give their copies for checking, they can do one thing on this not on this Friday. For copy checking, you can keep it there in the staff room to any of the teacher and hand over it to the any of the teacher and say to them to give to me, ठीक है, and I will check your copies. Fine. Those who want their copies to be checked, hand over it to any teacher in the school and inform to that teacher to give it to me, and I will check it, and later on you can take it back. Fine. So that's all for it today. Thank you.